ఇక్కడ ఈ సమావేశానికి ఇచ్చేసిన అందరికీ మా నమస్కారాలు తెలుపు. మనకు ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఓట్ల పండుగ వస్తుంది. ఓట్ల పండుగ అంటే ఓట్స్ ఫెస్టివల్. ఆ పండుగ రోజు చాలా మంది పోలింగ్ బూత్ లో కాకుండా ఏ విహారయాత్రకో ఏ పుణ్యక్షేత్రంలో ఒక పాపాలు గడగొట్టడానికి పోయినట్టు పోతున్నారు. అట్లా కాకుండా మనకు నాయకులు ప్రాపర్గా ఉండాలంటే మనం పోయి ఓటు వేసి మన యొక్క నియోజకవర్గాన్ని ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా చేసుకోవాలి అనుకుంటే మన నైతిక హక్కు ఏంటంటే ఓటు. ఇందులో కొన్ని రూల్స్ మనం పాటిస్తే బాగుంటుంది. కంపల్సరీ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఒక తీర్మానం చేయాలి, నేను నా ఫ్యామిలీ కంపల్సరీ ఓట్ వేయాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ కంపల్సరీ నేను ఓట్ వేయాలి. రెండోది ఏంటంటే ఆ రోజు ఫస్ట్ నా ఓటే వేయాలి, అంటే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వేసేసాను. ప్లస్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నోటాకు మాత్రం వేయదు, నన్ ఆఫ్ ది ఓక్ అసలు వేయదు. చూడండి, మీకు నచ్చొచ్చు నాయకుడు నచ్చకపోవచ్చు, ఆ అందరి లోపల అందరూ ఎదవలే కనిపించారు. అందరూ ఎదవలే, ఒక 25 మంది ఎదవలు, ఒక నన్ ఆఫ్ ది ఎవరు. ఆ 25 ఎదవల్లో మీకు లీస్ట్ పాసిబుల్ ఏదో వేసేయండి, మీకు నచ్చలే కాకపోతే వేయండి వాడికి. ఎందుకంటే కొంచెం గుడ్డిలో వెళ్ళలాగా కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు ఓట్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ బట్ నాట్ టు నోట్ ఆఫ్ లైక్ దిస్ some basic conditions. And before you vote, you should keep in mind some points. How my vote will help to the progress of the nation, to the progress of the society, to the progress of my children's future. These 3 things you should see. BJP always tells nation first, society next, family last, or self last. So the same thing, whenever you are voting, if you have in that mind that what you should do. For that reason, since 10-15 years, I have started a scheme in my office, and I tell everybody also. On voting day, it is a holiday, sir. It is holiday. So what I called my assistants is, you have to vote with family on the voting day. Because tomorrow is holiday for voting. You have to vote and put your photo with family that you have voted. If you put your photo with family as voted, you will get 1 day extra pay. You will get 1 day extra pay. All the people, it will be paid in cash. No party, I am not asking or requesting you vote to this party. Your consent permits to whoever you want to do. Sir, कल रात को आए थे 3000 दिए, ठीक है, you are happy with 3000, take that and vote for him. It is your mercy. तुम्हारा फ्यूचर उसको 3000 को बेच दे रहे. Because your freedom you are doing. My thing is, I am thinking of future, long future. You are thinking of next day future. ये 3000 से एक बॉटल लेता, एक चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी खा लेता, रात को सो जाता, सुबह उठता, फिर भीख मांगता, फिर से 3000 में फिर से भीख. But my principle is, to my staff, what I told is, you put photo with family. Those people who miss to vote, for them 1 day they salary cut, because it is a noble day, holiday for voting, not for your enjoyment. If you have done your duty, discharge your duty properly, then automatically what happens? You deserve reward. You have forgotten your duty. Duty and responsibility. CA बोलता है duty and responsibility very important है ना. आजकल तो ऑनलाइन हो गया, तो बहुत केयरफुल रहना. तो इसी वास्ते 1 day सैलरी कट ऐसा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. मेरा ऑफिस में तो 100% चाहिए वोटिंग. एंड दीज पीपल आर टेलिंग टू अदर्स ऑल्सो, अरे आप भी आपके पास को पूछो. सो लाइक दैट वन थिंग. एंड सेकेंड इज, इफ यू कंपेयर इंडिपेंडेंस एंड नाउ, इंडिपेंडेंस जब आया था, अपना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा बुक लिखे थे. आपको मालूम है क्या बुक लिखे थे नेहरू जी? नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. उनको इंडिया नहीं मालूम था. सरदार पटेल जी 500-600 संस्थान थे, सबके पास जाके मना के इंडिया में शामिल करा रहे ना. तो 500-600 संस्थान सब मिलके एक बड़ा इंडिया बन रहा. उनको मालूम है तो इतना बड़ा है क्या इंडिया. तो इसके वास्ते अरे मेरा कोच डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
उसमें डिस्कवरी में क्या कर दिए बोले तो थोड़ा मैं भी डिस्कवर करता हूँ बोल के बोले क्या क्या है कश्मीर का इश्यू। और नेपाल आके बोला हम भी शामिल होते भारत में, नको 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 तुम्हारा तुम्हारा लाइफ तुम्हारे को। भूटान बोला नहीं 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 तुम भी जाओ, सबको टुकराते गए। जो सरदार पटेल जी विलीन करे उसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोल के लिखे मैं इंडिया का समझा। ऐसा हो गया, होने के बाद क्या थोड़ा ही द प्रोसेस ही लॉस्ट कश्मीर, ही लॉस्ट द अदर थिंग्स व्हाट यू कॉल दैट कोको आइलैंड्स बांग्लादेश को दे दिया फ्री। उनका बेटी आई कच्चदीव श्रीलंका को दे दी। ऐसा सब रिकवर क्या वो डिस्कवरी हो गया। अभी सरदार पटेल के बाद अभी मोदी और अमित शाह जी आए, अभी क्या करे कश्मीर को ठीक कर दिया, जो गया था उसको रिकवर कर दिया। ऐसा ही सब वर्ल्ड में जो भी जा रहा वो सब दे आर रिकवरिंग। व्हेन दे आर रिकवरिंग नाउ दे आर करेंगे डिस्कवरी वाले ट्राई करें बिकॉज नाउ दीस पीपल हैव स्टार्टेड ए न्यू प्रोसेस कॉल्ड रिकवरी ऑफ इंडिया। ए मोदी एंड अमित शाह क्या करें अभी उन्होंने डिस्कवरी करें, अभी रिकवरी जो जो कोई वो रिकवर कर रहे हो तो रिकवरी ऑफ इंडिया हो रहा। तो जब पूरा रिकवरी होना पड़े अखंड भारत होना पड़े तो अपना कंट्रीब्यूशन रहना नहीं रहना। तो डिस्कवरी हो गया 75 साल पहले, अभी रिकवरी हो रहा आफ्टर 75 years। सो वी शुड आल्सो आवर वोट विल कंट्रीब्यूट फॉर रिकवरी। आरएस क्या होता फिर दूसरे लोग आ गए सोचो फिर डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। अभी नेहरू डिस्कवर नहीं करता अपन डिस्कवर करते, ये भी अपना इंडिया का पार्ट है क्या बोल के सोचना पड़ता है। ऐसा माहौल नहीं होना बोले तो वी शुड वोट फॉर ए गुड गवर्नेंस पार्टी which is giving its progress report। पहले बता रहा हूँ 10 साल में क्या करें और आगे क्या करेंगे बोल के बता रहे। दे आर नॉट टेलिंग दैट अब जो भी करो वो फ्री ये फ्री ये फ्री वो फ्री, फ्रॉम होम टू टूम सर्विस टैक्स ही नहीं है, सब फ्री दे रहा गवर्नमेंट। एक संसार के सिवा सब कर रही गवर्नमेंट। If you want tomorrow government will come and sleep on your bed also, I am telling very frankly, but except that everything government is giving free, why we should get free? Okay, कुछ आपदा कोरोना का जैसा आया तो you can give, but when there is nothing like that, why you should give free? So we should understand the पार्टी क्या कर रहा बोले तो 10 years का प्रोग्रेस पर बता के आगे 25 साल का बता रहा, और ये 25 साल का जो विजन है दिस विल बी लेइंग फाउंडेशन फॉर 1000 years ऑफ अपना इंडिया हिस्ट्री। लाइक दैट ये विजनरी गवर्नमेंट है। अभी इसी वास्ते द रेस्पॉन्स इन द पब्लिक इज आल्सो लाइक एनीथिंग। दैट्स व्हाई बिफोर यू वोट वी शुड थिंक टू whom I am voting, for what purpose I am voting, मेरा वोट से क्या चेंज होता। अरे मेरा अकेला वोट क्या चेंज करता, योर वन वोट विल चेंज। दैट्स व्हाई ए क्लासिक एनेक्डोट हैज कम। क्लासिक एनेक्डोट क्या है बोले तो एक बार राजा आता था, वो राजा क्या करा बोले तो बोला करता डेली 10 to 5 जो भी मेरे दरबार को आता శ్రీనివాస్ నువ్వు వినాలి నీకే చెప్తున్నా, మా ऑफिस बॉय भी आया उसको ये एक राजा पर तो मैं राजा हूं ना, उन्होंने कभी ऐसा रिलेट करते रहता। तो एक राजा उसके बोले कहते उनका प्रजा को डिक्लेयर करा जो भी whoever comes to my दरबार between 10 to 5 I will give free, but many items whatever you ask I will give free। बड़ा भीड़ लगी करते। एक हमारा ऑफिस भाई के जैसा उन्होंने भी करा है लाइन में 10 o'clock आगे करा, 5 बजे उनका नंबर आया खत्म हो गया था, घंटा बोल के आ गया बंद हो गया। अरे उन्होंने बोला अरे कल तो जल्दी आना, मैं 8 बजे आके लाइन में खड़ा रहता हूँ तो मैं आता। उसका टर्न आ रहा पीछे देखो तो बहुत बड़ा लाइन है, इसको तरस का लिया अरे जो धूप में खड़े हैं मई का महीना है तो तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ बोल के विजय कहते हैं। उसका हो गया टाइम हो गया। फिर तीसरा दिन आया कहते हैं इस बार 6 बजे आता है, 6 बजे खड़ा है, 6 बजे को उसका टाइम आता ही देखे तो पीछे बड़ा लाइन है। फिर तरस खा के तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, ऐसा चलते जा रहा। तो राजा को डाउट आया क्या अरे ये आदमी है सुबह आता और सबको तुम जाओ बोलो, उन्होंने आके नहीं ले रहा, उन्हें आके नहीं ले रहा। अरे क्या है, उसको बोला अरे क्या है जी तुम 1 महीने से आ गए, तुम
आके नहीं ले रहे, पूछ रहे भी नहीं और सबको दे रहे बोले तो हाँ सर आई एम ऑल्सो डूइंग, आई एम ऑल्सो गिविंग समथिंग टू ऑल पीपल। क्या दे रहे? तुम क्या दे रहे? तुम जो पूछ रहे वो दे रहे, मैं मेरा बारी दे रहा हूं। मतलब मेरा बारी था इधर, मगर वो मैं दान कर रहा हूं। तो हर दिन आपके पास जो है आप दिए, मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूं। मेरा टर्न है, आई एम गिविंग यू टू यू। द सेम एनालॉजी वी शुड आल्सो टेक। क्या बोलते, जिसके पास जो है वो दे सकता, तो अपने पास क्या है, टाइम देना पड़ता। उस दिन अपना टाइम इज मोर प्रेशियस। इसी वजह से मेरा रिक्वेस्ट क्या है बोल तो, उस दिन जाना, जाके कंपल्सरी वोट करना। यू शुड नॉट ओनली वोट by yourself, you should make all your family members vote. Not only your family, your neighbors also, your friends also. आजकल इसका भी मोबाइल ओपन करें तो नॉट लेस देन 50-60 ग्रुप्स रहते हैं। एक ग्रुप में 10 लोग भी पकड़ लिए तो 500 लोग रहते हैं। तो योर वन वोट would should motivate 500 people to vote. And voting percentage I am telling na is very less, especially in the educated and intellectual circle. Intellectuals meet लगा रहा था, तो intellectual meeting में there is no voting percentage because last year 2019 when a polling officer was going for rounds, there is a place called Jubilee Hills, Banjara Hills. Jubilee Hills में गए तो 4 बजे देख रहे उधर 1500 वोट है। 4 बजे इवनिंग 7 o'clock मॉर्निंग स्टार्ट होता, 7 o'clock स्टार्ट, 4 o'clock हो गया, इतना वोट पोल बोले तो you were surprised to hear the number of votes polled there. Intellectuals है, पूरा बड़े बड़े लोग हैं, 1500 वोट पोलिंग बूथ का अलॉटमेंट है। You just give a guess कितने लोग वोट करें, जस्ट अंदाजा नहीं। जीरो तो बहुत पेसिमिस्टिक है। अरे आप जीरो नहीं बोलना, इंडिया में 200 100 15 वोट, only 15 वोट। Adjacent slum is there. उधर भी 1500 वोट है। उधर 4 o'clock तक 1050 वोट हो गए, इधर 15 वोट, उधर 1050 वोट हो गए। दिस इज द लैक्सिटी, दिस इज हैपेंड। वोटिंग हो गया, मोदी जी आ गए, बाद में कुछ निर्भया कुछ हुआ है ना, कुछ इंसिडेंट होते ही कैंडल मार्च हुआ, स्लम में से कोई नहीं आया, मगर ये इंटेलेक्चुअल्स में से 1000 लोग आए, 1000 लोग। अगर आप वोट करते थे पहले, आपको एक कैंडल मार्च करने का जरूरत नहीं है ना। जिस दिन जो करना वो करना, दैट यू आर नॉट डूइंग। यू आर डूइंग ऑन वोटिंग डे, यू आर स्लीपिंग एंड इफ समथिंग इज हैपनिंग यू आर कमिंग विद अ कैंडल। कैंडल से क्या होता? आपका सहानुभूति है, बट डू यू हैव टू गिव कैंडल? व्हाई? बिकॉज दिस इंसिडेंट हैपेंड बिकॉज यू स्लेप्ट ऑन द वोटिंग डे। सो दीस टाइप ऑफ थिंग्स if you want not to happen, you should open your eyes. If not now, then when? अब 75 years में भी नहीं रहते हैं, आपको झूठ और सच में फर्क नहीं मिलता दिखता, then you have to test your eyes. You should know the background of the parties. You should know the performance of the parties. You should know the benefit to the society. At least as chartered accountants, after 2014, our value addition has happened. At least आज के दिन मैं और सुरेश सर साथ में, मैं आपको बहुत काम में आपके साथ आया, तो बिफोर 2014 सीए को नहीं भी मालूम था। We can relate with this also. That's why classic example I will tell. In our olden days when we were practicing, there used to be a puzzle to us. Scrutiny notice आता था, कहीं को आया नहीं मालूम। When you go and ask officer, he will tell, you ask your client only. Why I should tell? He has got bank accounts. Where he has got, sir? I don't know. You only inquire with your client. When we come and ask client, he will tell, sir, hi sir, you said 10 accounts है sir. आप नहीं पूछे ना, इसी वजह से नहीं दिया sir. ऐसा होता था. This was all post-mortem things. Now, after Modi came, within 5 years, now a new thing has come. AIS में पूरा उसका जन्म कुंडली आ जा रहा, everything is you are getting. You have to reconcile. There is no need to ask any person. Your client doesn't tell you. There is no problem.
You just see, you know what assets shares, where bank accounts are there, what property transactions are there, what shares transactions are there, what sources of income he is having. Everything is there in AAS. So you have to reconcile. So Modi ji क्या कर रहे हैं? Upfront कर रहे हैं. Upfront he is giving information. ये सब information है client का. तो client से पहले अपने बोल सकता है ये बैंक अकाउंट है लेके आओ, है ना? तो फर्स्ट टाइम ही आउट ऑफ आवर, बिकॉज सीए का वर्क भी बहुत ज्यादा हो गया, वो सर्विस एक्टिव हनुमान साहब के जैसा बहुत सर्विस एक्टिव है, तो असिस्टेंट को छोड़ देते, अब तुम कर दो, तब ठीक है ना, डाल दिया असिस्टेंट, वो क्या है साल को परफॉर्मेंस बताना है ना, तो बगैर रिकंसाइल के ये इसमें डाल दिया, फर्स्ट डाल दिया, डालने के बाद चुप बैठ रहा, क्या एक नोटिस आ रहा आपका एएस में ये ट्रांसैक्शन है which is not reflected in your notice, your return, kindly check करके you file a revise, then now Hanuman will comes to know, previously was not done, अरे ये क्या है आप नहीं बताए क्या सर, उस दिन था मैं तो जल्दी जा रहा था कल को, तो इसी वास्ते मैं डाल के चले गया, 31st था ना सर, डाल दिया, ठीक है अभी देख के रहा, but sometimes what happens, Hanuman sir is again busy. It has not come to the knowledge because he has not taken me. Client also has not told. Then third is a notice is coming. The difference is there. You file a revised return. You are not listening. You are not listening. Then what happens? Finally scrutiny notice will come. When scrutiny will come, sir, danger is there. What danger? Now a big instrument has come into the hands of assessing officer. Anything unexplained is direct 78% tax, interest, penalty, सब मिलके 100 रुपए को you are paying 120-130%. Client डूब जाता. You should be very careful. This is a small anecdote है. क्या बोले तो बचपन में अपने सबको मालूम है, एक जंगल को एक फादर सन गए तो क्या हो गया, डीप फॉरेस्ट में जाना बोले तुमको अच्छा नहीं है, तुम इधर बैठो, मगर टाइगर आ रहे तो पुकार दो, मैं आ जाता बोल के अंदर गया कहते, इन्हें अरे मेरा पप्पा आता नहीं आता देखेंगे बोल के, पप्पा बोला कहता, बोलते ही उन्होंने बात क्या है, अरे टेस्ट करा मैं, तुम आते नहीं आते बोल के, फिर सेकेंड टाइम गया, फिर पप्पा बोला, फिर आए, अरे फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आता नहीं आता, गए, फिर आया, नहीं नहीं ऐसे ही सेकेंड टाइम आते नहीं आते बोल के देखो, चले गए अंदर, तीसरी बार पापा बोला, असल टाइगर आया, इन पापा बोला, पापा नहीं आया, यही इधर देखो, फर्स्ट मोदी has given you AS everything, first पापा है, you have to do on your own, you have not done, he has given a mail that it is not tallying, second पापा है, second caution हो गया, अब वो भी नहीं करे बोलते, स्क्रूटनी नोटिस आया, तो टाइगर आया, कोई बचा नहीं करे, सीए तो अक्सर बचा नहीं है, once you get a scrutiny notice, you cannot do anything. Previously, okay, but now, even after having your information, even after cautioning you, you are ignoring and you are testing his powers. His powers. अरे क्या कर लेते देखेंगे बोले तो, he will show his power. So at least for chartered accountants, a sigh of confidence is there. When we are practicing, we are doing correctly. If you listen to me, I will do good service. If you don't tell me, you are the loser. So like this, to everybody, I am only telling chartered accountants experience. But for everybody, all professionals I am telling, for all persons who are living in India, they are having the same experience. Except for those people who don't want all these developments, improvements, कभी भी मरते रहना, डरते रहना, सब पछताते रहना, ये सब whatever people think, for those people, it will be very difficult. So, from my view, our sacred duty is to vote on that day, and if we vote only, we will get good government. All these 10 years, if you are satisfied, vote to the party. Or else, you want to again go back to 50-60 years backward, then whatever your party, wherever you want. I am not telling that it will surely happen, but then apprehension is there, depending on our experience. Only .1, .2, .3 లాగా 2 సెకండ్ టైం మాట్లాడమని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు అప్కి కూడా 400 పాలంటున్నారు. అయితే ప్రత్యక్ష కోపం వస్తుంది.
भाई कैसा होता 400 का, कैसा होता। तो मोदी जी बोले कहते ठीक है भाई 400 आप नहीं दिए तो मैं संन्यास ले लूंगा और योगी को लाऊंगा। तो सब क्रिमिनल्स, all brutal people, all KDs and all संघ विद्रोह, क्या बोलते हिंदी में, देशद्रोही। देशद्रोही बोलते कौन है मालूम है? टेररिस्ट, एक्टिविस्ट, माओइस्ट, सब लोग बोले नको नको नको, हम जिताएंगे मोदी को 400 पार। तो अपन कुछ फिगर करने का नहीं, 400 इज ओनली अ फिगर, इट विल ऑटोमेटिकली, if we contribute it will cross, if we don't contribute also it will cross, because the background work is done by all those Maoists, terrorists and all, because 400 के नीचे है तो मोदी जी चले जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे, वो और कत्वा है, ये सॉफ्ट मॉडल है, वो हार्ड मॉडल है। So like that 400, and one more thing, I will take a small example. In 1984 इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ, she got assassinated. The whole India moved. अरे आगे कैसा? Then her son stood in the elections, and we all got united except Telugu people. Except Telugu people. बाकी सब बल्कि अपना 42 सीट्स एपी में निकाल दिए तो 500 सीट्स में he got 415 seats. एक one person died. For them, the whole India voted how many? 415 seats. When we compare our lifetime achievement, Ram Janmabhoomi, 550 साल लड़े, 550 years we fought, and we got the opportunity to witness the great occasion of seeing Ram Lalla in Ayodhya. So this was a very big festival. A saal 2024 is very unique because we had 2 Sri Ramanawamis. 2 times we celebrated, on January 22nd and again in April. So that opportunity we got, and everybody got delighted, is it not? आज इसमें कितने लोग डिलेटेड हुए वो देख के थोड़ा हाथ उठाना, और जनवरी 22 को रामलल्ला को देख के कितने लोग खुश हुए, वो लोग हाथ उठाए तो मेरे को मालूम होता, हाथ नहीं उठाए तो आधा उठाए तो आधा खुश हुआ। The hand should be 90 degrees and it should touch your ear, then only 100%, नहीं तो 20%, 25% like that. So all you got. Now having got that happiness, how to reciprocate? How to reciprocate? No, for Indira Gandhi you have voted 415 seats. Now Ram Lalla has come after 550 years, and this was possible because of a stable government, able government and good governance. So now it is our duty to see that it crosses not 415 but beyond that. So it is our duty. So like this, if any person thinks, then what happens? Automatically it will be 400 पार is nothing, because the confidence कैसा रहना बोले तो अभी ओल्ड सिटी में मालूम रहता कि कैसा रहना, अभी जीतने दो नहीं जीतने दो। हमारे पूरे एंथोनी मूवी में अमिताभ बच्चन बोलता, he was jailed by his own brother inspector. आप 3 मारे सर, मैं तो एक तो मारा ना था मेरे को। So like that, whether you win or not, but whether you fought or not is more important. So like that, you should see. And one more thing, a small story I am reminded of. There was a very good sacred village itself. In that, all the people are very pious. That means they are very धार्मिक है, सनातन है, हर दिन यज्ञ करते रहते, यज्ञ के बिना, without doing यागम, they never used to have their meals like that. So whatever daily they were putting is arjam into the Yajnavatika. Suddenly what happens, while putting pan, suddenly slipped into the Yajnavatika. In one house, it slipped into the Yajnavatika. गौरव गिरी पे, that means बहुत बड़ा ये हो गया बोल के देखे तो that the pan is converted into gold. बोले तो इतना 1 तोला गोल्ड हो गया, परेशान हो गया, पान कन्वर्टेड टू गोल्ड। देन स्लोली वो हस्बैंड को बताई ऐसा हुआ बोले तो उन्होंने भी तुका, he also split into that, that also turned into gold. अरे
magical. Then daily what they were doing, daily they were performing yajna and they were speaking into them. Daily they were getting gold. Suddenly neighbors observe, I mean, suddenly these people have become rich. They silently, they asked them to they also came to know. They also started speaking. Like that whole village started spitting and gaining gold. And everybody in the village became rich, except one. They are very pious and they said, why don't all have become rich? We should also speak up. No, never lose your dharma. We don't want that money. So like that they continued. After a period of time, what happened? All have become rich except this family. And they started mocking this group. You are बेकार people. आपको जीना कैसा मालूम नहीं है. आपको ऐसा कर रहे. You will never live. So they were feeling the frustration. After 2-3 months, they said it is not good for them to stay there, and they started leaving the village. And husband told wife that while we are leaving the village, never look back. You have to see only forward. अभी क्या होता बोले तो कभी भी किसी आदमी को वो ये मत करना बोले तो क्या होता बोलो वही काम करता. अभी देखो 360 days we are roaming freely in the streets, but on Vinayak Chavithi day we should not sing the chant. But what we will do on Vinayak Chavithi day, specifically we will see whether it will be visible. In the same manner, if I ask our audience for 10 minutes, don't think about monkey. Just close your eyes and think about everything except monkey. आप आंख बंद करके देखो आपको मंकी दिखता और कुछ नहीं दिखता. तो ऐसे बीवी को बोले तो ये जमाने में नहीं, वो जमाने में बीवी मर्द का बात नहीं सुनती थी. तो 4 स्टेप डालते ही वही my husband told that should not turn back and see. She out of curiosity she turned back and she was surprised. The whole village was burning. The whole village was set to fire. Then he asked her husband, why, what happened? You see, the city was good until you are there. ధర్మం ఎప్పటిదాకా ఉందో అప్పటిదాకా ఆ గ్రామము తెలుగు సమझ में आता ना वो ग्रामम वो विलेज अच्छा था. एक बार धर्म चले गया अधर्म आ गया तो क्या होता है चलते ही रहता. इसका मिसाल देखो, इसका एग्जाम्पल है. You take previously we tell Iraq was Hindu nation, Iran was Hindu nation, Afghanistan was Hindu nation, Pakistan was Hindu nation, Bangladesh is Hindu nation. All these nations, what is happening? Daily fight. In Pushpa 32, Pushpa is not flower, it is fire. Wherever flower has gone, Hinduism is just like flower. Flower has come back and fire has started. Daily in paper you will see Iran war, Iraq war, Afghanistan Taliban, Pakistan terrorists, Bangladesh some other people. So wherever our Sanatana Dharma has moved, Dharma has left, it is in fire. Now the time has come. 10 years. Again we are coming to righteous path. After 67 years of what you can tell, all perverted education, perverted what you are preachings, we are coming into the right path. And 10 years hard work is there. Now from here takeoff is there. If you are not going properly, just like takeoff stage, the aeroplane also picked the momentum. Now after taking off, now we are in the sea. Everybody, you see, why our Sanatana Dharma has lost its missing? Because all people, our own Dharma people, have started splitting into our own religion. That's why we have gone into the rule of 800 years of Mughal rule and 200 years of foreign rule. And after 1000 years, also 75 years of colonial rule we are continuing. So now it is the time for us to do. For this purpose, 3 things are very important. 67 years, nothing has happened. In this 10 years, why it has happened? Because this is the first Prime Minister who is telling he is never feeling shy to tell his identity. Wherever he goes, he expresses his Hindu identity. Whether it is Chitagi Rashtravam,
whether it is Kashi, whether it is Ayodhya, he is going to same attire. Even if he is going to Rameshwaram, he is using that attire